A very good morning, students. I, Ma'am Shilpa Das, welcome you all in our online class. Today, in this module, we will be going to see what is information transfer. In that, we will be going to see first verbal to non-verbal and second non-verbal to verbal. So let's start our class. Now, what is information transfer? So in that already I have two types there are. First is verbal to non-verbal and second non-verbal to verbal. Verbal means a paragraph or a passage and non-verbal means diagram, chart, flow chart, map, pie chart, table, tree diagram, web charts, etc. Girls, I know that last year we did few of this chart in English and other subjects. Now you can see few more diagrams. The first one is tree diagram. The second one is pie chart. Pie chart means circle and you have to distinguish. The third is statistical tabular data. Fourth one is map or web or chart. Last year I know that you know this thoroughly. And the last one is flow chart. Now we will be knowing about what is information transfer in writing skill. Information transfer is the rewriting of information given in one format into another format. So anything, for example, if passage or paragraph is given to you, you have to convert it into the diagram. ओके अगर कोई पैराग्राफ या छोटा सा पैसेज दिया रहेगा तो उसको आपको वेब डायग्राम नहीं तो फ्लो चार्ट में कन्वर्ट करना है. ओके if a paragraph is given, then we have to convert it into diagrammatical table or graph. And if a graph or pie diagram or any other forms are given, then we have to convert it into small paragraph. Generally, information transfer must be short and simple. And if it is given in graph or flow chart, अगर आपका ग्राफ वेब डायग्राम या फ्लो चार्ट में दिया रहेगा तो आपको उसको काय में कन्वर्ट करना है, पैराग्राफ और पैसेज में. Now verbal to non-verbal. We will going to see how verbal is converted to non-verbal. How to attempt this question. Children, I'll be explaining you into Hindi. For this question, you will be given a paragraph related to some topics or issue. Okay, तो आपको एक paragraph दिया जाएगा. You will have to pick out the main points from the information given and reframe it in the form of a table. अगर एक paragraph रहेगा उसमें से आपको main points लेना है, words लेना है और उसको टेबल के फॉर्म में या ट्री डायग्राम या फ्लो चार्ट या वेब और अ पाई डायग्राम मैप एक्सेट्रा आर मेंशन इन द इंस्ट्रक्शन. ओके, इन अदर वर्ड्स यू विल बी कन्वर्टिंग वर्बल इंफॉर्मेशन इनटू नॉन वर्बल इंफॉर्मेशन. जब एक पैराग्राफ को आपको वेब डायग्राम या फिर ट्री डायग्राम में करना है उसको बोलते हैं वर्बल टू नॉन वर्बल. ओके, and your answer should contain only those words which are essential part of the non-verbal presentation. Avoid adding your own point और अपना own point उसमें नहीं डालना है, नहीं लिखना है. So go over once again the points,
that you have used in the diagram carefully. It is very important to understand what is expected in the answer. Or when you attempt the question, you have to read the question 2 to 3 times. और वो क्वेश्चन को आपको समझना है और अपना ओन वर्ड्स में नहीं लिखना है. सिर्फ अगर पैराग्राफ दिया जाएगा दैट इज़ वर्बल टू नॉन वर्बल, तो आपको कोई भी डायग्राम आपको बनाना है, जैसे मैंने पहले स्लाइड में आपको बताया है. Now assignment for this, that is verbal to non-verbal. Read the following information and prepare a pie diagram for the same. Okay, यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है तो आपको उसको पाई चार्ट में या पाई डायग्राम में करना है. So I'll be reading you this passage. Annual water usage in Maharashtra. Water is life. It is a universal solvent and an important resource. The annual usage of water differs in various sectors of Maharashtra. The major occupation of Maharashtra being agriculture, the maximum amount of availability water is used for irrigation. That is 86%. The distance following place 7% is contributed by domestic sector, including drinking, washing, cooking, etc. There is a close competition of other sectors which is not far away with the development of a nation is the industrial sector. The consumption of water by the industrial sector is very negligible, which is 1%. We know energy sector plays a vital role in the development of a nation. In this sector, the use of water is almost nil. If we try to observe its place in the chart, we do realize that it holds 0% usage and is yet to open its account. So children, you have to read this passage 2 to 3 times और जो मेन इसके पॉइंट्स है आपको लिखना है, तभी आपका वेब डायग्राम या फिर फ्लो चार्ट जो क्वेश्चन में बोला गया है या पाई डायग्राम वो बन पाएगा. ओके, नाउ आंसर फॉर दिस एनुअल वाटर यूसेज इन महाराष्ट्र. सो चिल्ड्रन ऑलरेडी आपको बताया गया है, तो सर्कल और उसमें लाइन वो कौन सा होगा, दैट इज़ पाई डायग्राम. सो इरिगेशन कितना है 86%, देन डोमेस्टिक 7%, others 6% and industry 1%. Like this you have to frame your answer. आपको ऐसा जो भी बोला है क्वेश्चन में कि आपको पाई डायग्राम में बनाना है या फ्लो चार्ट में, आपको ऐसे ही बनाना है. Now we will study non-verbal to verbal. A diagram, chart, table, flow chart, map, pie chart, ट्री चार्ट एंड वेब डायग्राम. नॉन वर्बल में ये सब दिया रहेगा और आपको काय में क्या करना है, यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू अ पैराग्राफ और अ पैसेज. एक पैराग्राफ या फिर छोटा सा उसका पैसेज बनाना है. नॉन वर्बल टू वर्बल. सो हाउ टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है वो इसमें दिया है. For this question, you will be given some information in the form of table, tree diagram, flow chart, a web diagram, pie diagram, etc. आपको information दिया जाएगा ये सब diagram में, and information of this type is called non-verbal, और इसको क्या बोलते हैं, non-verbal. The information given will be of bare minimum. It will be diagrammatic or pictorial and consist of a few words or phrases. The information will be about some topics or issues which will be mentioned either as the title of the table,
pie diagram or tree diagram or in the center of the web or map. Read the points carefully. It will be very important to understand what is expected in the आंसर. आपको जो वेब जो भी पॉइंट्स दिए हैं उसको बहुत अच्छे से रीड करना है, तभी आपको समझ में आएगा कौन सा पॉइंट कहाँ लिखना है. यू विल एक्सपेक्टेड टू यूज़ द इंफॉर्मेशन टू राइट अ पैराग्राफ converting all the points given. Don't forget to give a title to the paragraph. और जो भी फ्लो चार्ट या ट्री डायग्राम जो भी रहेगा उसको आपको काय में कन्वर्ट करना है, पैराग्राफ या पैसेज में, और उसमें आपको टाइटल देना. जैसा स्टोरी का नाम रहता है ना, वैसा आपको इसमें टाइटल भी देना बहुत ज़रूरी है. Now, non-verbal to verbal, that is assignment. These all things you have to write in your writing skill section. The pie chart below shows the percentage of a following person in India. Watching TV programs, write a short note using the given information. तो ये इन्फॉर्मेशन दिया है, आपको उसमें शॉर्ट पैराग्राफ लिखना है. मैन 10%, न्यूज़ क्विज, ओल्ड पर्सन्स, रिलीजियस, सीरियल्स 10%, student 30%, cricket, films, Discovery Channel, and women 50% family serials. So the answer, first of all you have to write title TV viewers in India. The pie chart gives us the information about the TV viewers in India. It shows the percentage of the person in India watching TV programs. It reveals that the choices of watching TV programs of women, man, old person are quite different. The maximum number of watching family serials is women, accounting for 50% of the total TV viewers. However, 10% of men prefer watching news and quiz programs. Old person are generally interested in watching religious serials and their percentage is just 10%. Favorite TV programs of 30% of students are cricket, films and Discovery channels. So children, I hope that you have understood how to write this. Okay, so this all things you have to write in your writing skill. Thank you.